तो आज फाइनली है फिनाले लॉकअप का। जी हाँ, आप सबका फेवरेट रियलिटी शो जिसने पिछले कुछ महीनों से हम सबको हुक करके रखा था। ये रियलिटी शो जब इनिशियली आया था तो नहीं लगा था कि शायद इतना पॉपुलर होगा, लोगों को इतना पसंद आएगा। बिग बॉस से भी कंपेयर किया गया था, बट नाउ बिकॉज अब हम फिनाले के करीब पहुंच गए हैं तो ये बोलना बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा कि लॉकअप ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग जगह बनाई है लोगों के बीच में। तो अब है फिनाले, हम लॉकअप के सेट पे ही है। तो बस कुछ ही देर में, जैसे कि मैंने कहा, कंटेस्टेंट आएंगे, उनके इंटरव्यू होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस है कि कौन जीतेगा। हम आपको बता दें कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है लॉकअप के टाइटल को जीतने के लिए, वो ऑफ कोर्स मुनावर है, प्रिंस है, शिवम है एंड कहीं ना कहीं पायल भी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा। जो भी अपडेट होगा, कौन एविक्ट हो रहा है, किसको मिलेगी ये ट्रॉफी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए ग्लिट्स विजन यूएसए। काफी इंटरेस्टिंग रहा ये सीजन। किस तरह से आप देखते हो? आप क्लोजली फॉलो किए, आप अंदर भी जा सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग शो है। जेल में रहना एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन जैसे सिचुएशंस में ये रहे हैं। मैंने उनके बेड देखे, वॉशरूम्स देखे एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी शो। आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग शो और मुझे लगता है कि जो भी टॉप 5 है बहुत डिज़र्विंग है और बहुत अच्छे से खेले हैं एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शो। You recently entered the lockup house as a warden and कितनी आपकी memories relive हुई? Oh, I think it was amazing being the warden, especially along with the Jailor Karan and बहुत मज़ा आया। I think वो एपिसोड बहुत मज़ेदार था, हमने बहुत बात की और अच्छा लगता है। आई थिंक ऑब्वियसली मेमोरीज थोड़ी बहुत ताज़ा हुई बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट क्योंकि इस बार मैं दूसरी साइड पर थी और मैं अंदर आके लोगों को पूछ रही थी वो उनका खेल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज सिमिलर लाइक मेमोरीज ताज़ा हुई बट एट द सेम टाइम बहुत अलग। If you were in the show, do you think you would have won this? Yes. Okay, so Yes, I think so. So you have followed this show very closely. So who are your top 3 contestants and who do you see as a winner? I cannot answer that because मैं भी इस शो का हिस्सा रही हूँ, भले फिर वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना रही हूँ, पर एज अ वार्डन आई डू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द शो और इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इस शो के जेलर आपको कैसे लगे? इस शो के जेलर बहुत अच्छे हैं और जेलर जैसे नहीं है। आई थिंक सब उनसे एज ए जेलर की तरह डरने से ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस, लाइक एवरीबडी लव्स करण। Guys, last question. Also as a contestant की अगर बात करूँ तो कौन रहा है? मैं उसका जवाब नहीं दे सकती। आई थिंक सभी बहुत अच्छे से खेले हैं एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि एंड में हमेशा एक ही विनर होता है, पर जर्नी सबकी उतनी लंबी होती है। सो मुझे सभी कंटेस्टेंट, सभी कैदी बहुत अच्छे लगे। एक छोटा स्टेट था एज अ वार्डन, बट क्या फ्यूचर में हम होस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आपको? कितना मज़ा आया उस चीज़ का? आई थिंक एज अ होस्ट मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैंने इससे पहले कभी होस्ट नहीं किया है, पर जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लगा। स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट था, करण का साथ मुझे बहुत हेल्प किया है, तो ऑफ कोर्स it was smooth because of him. Ma'am, we saw your journey in Big Boss house. Last question. You are very straightforward. जो भी आता था आप straightforward. Do you think Universe is playing the same type of game what you have played in Big Boss? मुझे नहीं पता कौन मेरी तरह इस शो को खेल रहा है या जो भी, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज माई सेल्फ। और ऐसे शोज़ में आप किसी की तरह होने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं पर वो ज़्यादा टाइम तक कोई कर नहीं सकता because cameras पकड़ नहीं। So my journey as a jailor has pretty much been a roller coaster ride, emotional
sometimes high, sometimes low. I've had to take a lot of tough decisions. Sometimes I had to come at 1:32 in the night and sort things out. But as we said, we had the best contestants as caddies, and I think that's what made the show. It's always about, the soul of the show has always been the contestants, and well, when you work with them, be it roadies, be it Love School, I've always had this connect with all the contestants, and that's also again what happened here. But this was a lot more hardcore, also for the contestants and also for the back end team. And I'd like to thank the crew as well, from the all these mirrors that you see are all camera based, and from the cameramen to the people who used to get food, to the editors and last minute things, to the makers, to the creatives, to the everybody. They've done a fantastic show, and that's why we are number one. Karan, whom do you see as a mastermind of this jail? Mastermind of this jail was very clearly Munawar. I think a lot of people would have the same opinion, because the way he would understand situations and use them for his advantage, clearly sort of put him aside from all the other games that were being played. It's very easy to copy a game, but it's very difficult to have your own sort of standing and to have your own very clear distinction of who you are. So I think for me, that was Munawar, who played very smartly, and at the same time, Payal was also a fearless sort of a player, and she's throughout played with courage, and a lot of times she was hated, but Payal being Payal, she never cared about it. How was the transition from a contestant to a jailer? I think it was a transition from being a judge to a contestant to a jailer. I don't think I would ever want to be a contestant again, because I don't know what it was for me. But I am very, very glad and proud that I was behind the scenes on this show. I now realize that अंदर जो हम कर रहे होते हैं, like when I was a contestant, हमें नहीं पता होता कि इन चार दीवारी की बाहर कितनी मेहनत हो रही होती है, एंड क्या क्या किया जाता है एक टेलीकास्ट निकालने के लिए और एक जर्नी क्रिएट करने के लिए. एंड नाउ दैट आई हैव सीन दैट पार्ट, आई थिंक आई एम बेटर ऑफ behind the walls. What did you Do you miss the believe most about Munawar has the best chance of winning this show? I think everybody who's in the top 5, I don't know if you've seen abhi wo gaya hai ki nahi gaya, no, I think a lot of people who've reached the finale have had the best chance of winning Lockup season 1. But at the same time, Lockup is not like any other show. Lockup is a very different concept, as you already have seen, and that is why we raked in the kind of numbers that we raked in. So, well, I know, because the finale is already over. You don't know, so keep guessing. Karan, what did you miss the most about being a jailer? Who was my personal favorite? Okay, so as I said, do we come here? Okay, so there's I don't think. See, again, as you know, I've had so many friends inside the show. I've had so many enemies also inside the show who've actually battered me when I was in another show. But I've gotten a lot of love from everybody because they've understood what I came in for. I came in for, I was always very selfless, and we were only about them. And it's a beautiful feeling when you only go inside a show and you're not doing anything for yourself. You're not competing. You're only providing them with the kind of direction and the kind of sort of balancing act. Sometimes you don't know. You stray away from the correct direction, and it was always playing on my mind. कि यार ये गलत जा रहा है, इसके पास ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है. I used to always come in, अपने तरीके से allowed नहीं होता था, but I never cared. So yeah. One last question. Your best moment? Which was my best moment? I think मेरी best moment वही थी जब winner announce हुआ Lockup season 1 का. I think एक लंबी journey है सबके साथ. बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारा कभी हम खुश थे, कभी हम गुस्से में थे, कभी हम emotions जो हैं, it just kept up and down. So I don't think I'll be able to take out one moment, but yes, I think. What will you miss the most? What will I miss the most? What I will miss the most is
this feeling of responsibility, because now I'm not watching Lockup as just somebody who's getting entertained from it. I'm watching Lockup as a responsibility because I sort of have to guide them. I sort of have to make sure that what they don't go stray away from their direction. And, sometimes they make mistakes. It's always nice to have somebody who has a better perspective to come and tell them what the mistakes was. And I think that part of the format was really nice. I'm going to miss that. I'm going to miss... Thank you. One last question. Yes. hosting का part कैसा रहा Jailor और Warden? I think जब तेजस्वी एंटर हुई तो मैं भूल गया कि मैं जेलर था. दिख रहा था. जैसे कि अभी मैं अगेन थोड़ा हो गया हूँ. But I think it was a lot of fun. हम लोग बिग बॉस में एक साथ थे. कैमरास थे जो अभी शायद मैंने उतार लिए थे और it felt like that. But the biggest embarrassment was कि मैं भूल गया कि मैं जेलर हूँ और contestants जो हमारे कैदी थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया भाई आप तो मतलब जेलर ही नहीं लग रहे हो अभी एकदम से आप करण कुंद्रा बन गए हो. But yeah, I think it was amazing, it was beautiful, and thanks to her to have actually taken up time. Thank you. Come. Guys.